Hey guys, welcome back to my channel. I'm Siddharth Ghosh, and in this lecture, we're going to do the part 2 of the chapter Constitution Why and How for CBSE Class 11. And this is the part 2 of this chapter. So, we're going to complete this chapter in this class, in this lecture, and we'll move further on with other chapters. So, let's start. So, we've done functions of the Constitution. We have finished the fundamental identity, that is collective identity and the moral identity. We have to do constituent assembly today a little bit, and objective resolution, institutional agreement, and provisions adopted from the constitution of different countries, and fundamental rights. And then we'll do the question answer part. Let's start. Objective resolution. It was moved by Jawaharlal Nehru in 1946. तो 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने वह दिया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. दिस रेजोल्यूशन encapsulated the aspirations and values behind the constitution. तो जो वैल्यूज हैं, जो एस्पिरेशंस थे, वो इनकैप्सुलेटेड थे बिहाइंड द constitution. Based on this resolution, our constitution gave an institutional expression. एक institutional expression दिया to these fundamental commitments: equality, liberty, and democracy, sovereignty, and a cosmopolitan identity. तो ये एक एक्सप्रेशन दिया, इंस्टीट्यूशनल एक्सप्रेशन दिया, मतलब फंडामेंटल कमिटमेंट्स में, जिसमें इस रेजोल्यूशन के बेस जो कमिटमेंट्स थी वो इक्वालिटी की कमिटमेंट थी, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, sovereignty, and a cosmopolitan identity. Institutional agreement. This ensures balanced institutions. Balanced. It was a balanced institution. अब बैलेंस में मान लें जैसे हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, जो था वो डिवाइडेड था to the to the various organs, which are legislature, executive, and judiciary. So इनमें powers बांटी. Checks and balances. This also provides checks and balances. Checks और balances को भी provide कर सकते हैं. Vertical में क्या था? Power among the divisions of power the powers were divided among the center, state, and the district government. अब center में divided था power, state में divided था, district में. It represents deepening of democracy and working at grassroots level. Grassroots level मतलब इतना detail में, है ना? Provisions adopted from constitutions of different countries. यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब जो सारे provisions जो थे which were adopted from constitution of different countries, अलग countries के. यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन, चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, power of judicial review and independence of the judiciary. तो जुडिशरी के पास पावर है टू रिव्यू लॉज को रिव्यू करना, which were made up by एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर. दोनों एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव जो लॉज बनाते हैं, जुडिशरी के पास पावर है वो रिव्यू करना. आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, डीपीएसपी which is डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. इसमें क्या लिखा है, जो गोल्स हैं और दे मस्ट फुलफिल, मतलब एक स्टेट का जो गोल है ये चीज चेंजेस लानी है, विच शुड बी फुलफिल्ड. फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. तो प्रिंसिपल्स जो थे, लिबर्टी के प्रिंसिपल्स, इक्वालिटी होना चाहिए, लिबर्टी होना चाहिए, फ्रेटर्निटी, उसके प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया था. कैनेडियन, क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द आइडिया ऑफ रेसिडुअल पावर्स. क्वासी मतलब ग्रुप में, क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द आइडिया ऑफ रेजिडुअल पावर्स. ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट पास द पोस्ट. इसमें क्या होता है, मेजोरिटी जीतती है, मेजोरिटी विंस. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द आइडिया ऑफ द रूल ऑफ लॉ, दैट लॉ इज सुप्रीम.
इंस्टीट्यूशन, द स्पीकर एंड हर हिज रोल। कौन सा इंस्टीट्यूशन है, उनका स्पीकर कौन है और उसका रोल क्या है। लॉ मेकिंग प्रोसीजर, लॉ मेकिंग, लॉ का जो प्रोसीजर बनाने वाला होता है वो फॉलो करते हैं। फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं। सो फंड राइट टू इक्वालिटी, सब इक्वल, एवरीबडी इज इक्वल, एवरी राइट टू फ्रीडम, राइट सबके पास फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, correction and educational rights, right to constitutional remedies. So these are all your fundamental rights. Let's see. Name main countries from where institutions and features are taken for the Indian Constitution. It is said that Indian Constitution is a borrowed bag because this Constitution has many foreign sources. Britain has maximum impact on the Indian Constitution. Besides Britain, USA है, Canada है, Ireland, Australia, and South Africa, जिसमें influence was the Indian that have influenced the Indian Constitution. सो इट इज राइटली सेड इंडियन इज अ borrowed bag, मतलब जो सारे कंट्रीज हैं इन जो इन्फ्लुएंस हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ द डिसीजंस वर टेकन बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. Taking decisions by in the Constituent Assembly was not easy because of thorny issues. There were many people and groups of divergent opinions, but the members were fired with high sense of uh, sorry patriotism. Therefore, all the decisions were taken by the consensus, which could be possible with the spirit of accommodation. So मतलब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो डिसीजन थे, टेकिंग डिसीजन मेकिंग, वो बहुत ज़्यादा हार्ड था, बहुत इजी नहीं था. तो बहुत सारे ग्रुप्स थे पीपल, उनके डाइवर्जेंट अलग अलग ओपिनियंस थे, बट मेंबर्स विल फायर विद हाई सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म. जो मेंबर्स वो देश मतलब एकदम देशभक्त, हाई सेंस है ना, दे वर फायर्ड. तो एक कॉन्सेंसस से उनका डिसीजंस मतलब डिसीजन मेकिंग वर टेकन बाय द कॉन्सेंसस व्हिच कुड बी पॉसिबल. किससे पॉसिबल था? एंड द स्पिरिट ऑफ अकोमोडेशन. What is the preamble of constitution? A preamble is the introductory part, मतलब शुरू वाला part of the constitution जो idea देता है forms of government, values, philosophy and the commitment of the constitution. मतलब एक idea, एक छोटा सा idea देता है in the introductory part, शुरू वाला part. Preamble helps in the interpretation of the constitution. It helps in interpretation. Interpret करता है preamble. अब लॉन्ग क्वेश्चन हम करेंगे. व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ इट परफॉर्म्स its role for society. It is a fundamental law of the land. It is defined as a body of rules, regulations, and understandings on the basis of which state is constituted and governed. The constitution is also the instrument of realizing the aspirations of people. It is a vital role for society as it possesses the basic allocations of power in society. The constitution of a country indicates the framework of the government with the respective role of each organ of the government. The constitution influences society and in turn is influenced by society. Indian constitution represents the ethos, values, and the preference of Indian people, and at the same time has successfully given a direction to the Indian society to become a liberal, secular, democratic, and a modern society. The constitution plays this role in all societies. We can take an example of Chinese and Russian uh, constitutions also. तो एक रोल होता है कि यू नो मतलब एक फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट देता है, मतलब each government has that framework, indicates एक framework देता है. It also influences society, to influenced by society, influence culture society को है ना, constitution कि जो rules follow करना, and society से भी influence होती हैं. And it also represents the values, ethics and the preferences of Indian people कि लोगों की values क्या है, लोगों की ethics क्या है, लोगों की preferences क्या है. And एक डायरेक्शन देता है टू इंडियंस टू बिकम, एक डायरेक्शन देता है to Indian society that it can become a liberal, secular, and a democratic and a modern society. It also plays an important role in all societies. अब all societies में जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया चाइनीज और रशियन कॉन्स्टिट्यूशन also. This is the importance of a written constitution. It represents the structure of government and the mode of governments. The constitution is taken to be taken as a written, but it does not mean that there cannot be an unwritten constitution.
British coins is an example of unwritten, which is working on the basis of unwritten understandings, traditions, and conventions. But most of the countries in the world, there are written constitutions, which are in the form of a document written by a specially constructed constituent assembly. The written constitution has its own utility and importance. The written part of the constitution is a clear indicator of the jurisdiction of power or powers of a particular organ. It cannot be ambiguity in a written constitution if it can be explained if it is. It is generally available in the form of document that is prepared by the continuous discussion and debate with the process of decision making, maybe the majority method or it can be the method of consensus. A written constitution is more popular. So क्या बोलते हैं इधर जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है वो एक्सप्लेन मतलब जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होती है इट इज यू नो स्ट्रक्चर मतलब इट एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बनाती है. अब जैसे ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्रिटेन गवर्नमेंट अनरिटन भी है. जैसे एन एग्जांपल ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है इज एन एग्जांपल ऑफ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. उसमें अनरिटन अंडरस्टैंडिंग्स हैं है ना. ट्रेडिशंस भी अनरिटन है लिखे नहीं है कन्वेंशन. बट जो मोस्टली कंट्रीज क्या फॉलो करती है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज बाय एक तो उसकी खुद की इम्पोर्टेंस है खुद की ओन यूटिलिटी एंड इम्पोर्टेंस. It is a clear indicator where jurisdiction of power of a particular organ. एक particular organ जैसे उसके पार जो है उसकी इम्पोर्टेंस है ना. बट ऐसा नहीं it can, the मतलब like it is generally available but the written constitution is available in the form of document which is prepared by continuous discussion. उसी से डिबेट डिस्कशन से पता लगता है ना कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में आना चाहिए ये वाले लॉज होने चाहिए ये सब होना चाहिए राइट. तो दैट्स व्हाई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन में समझ नहीं आएगा ज्यादा मोस्टली आएगा. बट जैसे लाइक सब डिस्कशंस करके हम लिख सकते हैं राइट. तो इट इज मेजली आइदर इट मे बी द मेजोरिटी मेथड से कि मेजोरिटी बोलती है हाँ ये वाला होना चाहिए या तो कॉन्सेंसस. So it is more popular in the written constitution. So thank you guys for watching. I'm still, many political science नहीं थी, but I'm still trying my best कि ना आपको मैं मतलब अच्छे से explain कर पाऊँ. मेरा ये best दिया मैंने अपने इसमें. And please guys support me. I'll make more videos. I'll be better in the coming videos and I need your support. Thank you guys who all are supporting me. I means a lot. Thank you so much and more videos coming soon. Thank you.